Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, the topic which I'm talking upon, that is the renal physiology and its part, because Dr. Razia has taken a lion's share of this section of the physiology. Well, in my part or in my share, the dealing of the acid-base balance. And now, in this much sitting, I'll be talking upon the renal tackling of the H-ions imbalance. The picture before you is factors affecting renal bicarbonate reabsorption. You're looking here, filtered load of bicarbonate, prolonged changes in the PCO2, extracellular fluid volume, plasma chloride concentration, plasma potassium concentration, hormones, for example, mineralocorticoids, glucocorticoids. You are looking here. Sodium comes in tubular fluid, that is reabsorbed through the renal tubular cells into the blood. You are looking here on this side, renal tubular fluid. These are the cells. These are the interstitial fluid. Looking here, sodium is reabsorbed, chloride is reabsorbed, sodium is reabsorbed and potassium is secreted. जो चीज़ ट्यूबुलर फ्लूइड में आ जाती है उसको हम कहते हैं secreted. जो interstitial fluid में जाती है उसको हम कहते हैं reabsorbed blood. सोडियम देखें, again it is coming into reabsorbed and H ions reabsorb हुए ट्यूबुलर सेल्स में आए, वहाँ पर H2CO3 बना और उसने फिर डिसोशिएट किया H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में. इस तरीके से HCO2 भी रीअब्जॉर्ब हुआ. ये देखें ना, H आयंस आया और H2CO3, यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्यूबुलर सेल में मिलके बनाया H2CO3. H2CO3 जो है वो टूटा, डिसोशिएट हुआ किसमें? H आयंस में. ये ट्यूबुलर फ्लूइड में चला गया और ये HCO3 आ गया ब्लड में. यहाँ पर आप देखें कि ये किडनी जो है, इसका फंक्शन ये है कि H आयंस को ट्यूबुलर फ्लूइड में सिक्रीट करके एक्सक्रीट करना और HCO3 को एब्जॉर्ब करना. इस तरह ये H आयंस को टैकल करता है. फिल्टर्ड लोड ऑफ बाइकार्बोनेट, प्रोलॉन्ग चेंजेस इन द PCO2, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये इसके फीचर्स हैं इस के किडनी के बफरिंग एक्शन के. इफ सेक्रेटेड H ions combined with filtered bicarbonate, bicarbonate is reabsorbed. कानून है. If secreted H ions combined with phosphate or ammonia, net acid excretion and generation of the new bicarbonate occur. ये गौर से सुन लीजिए. इफ सेक्रेटेड H ions, सेक्रेटेड वो होते हैं जो कि ट्यूबुलर फ्लूइड में आते हैं. कहाँ से? ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रीनल ट्यूबुलर सेल और वहाँ से ट्यूबुलर फ्लूइड. H ions आर सेक्रेटेड कंबाइंड विद फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट. जो बाइकार्बोनेट फिल्टर होके आया उससे मिलके बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड. If secreted H ions combined with phosphate or ammonia NH3, net acid excretion and generation of new bicarbonate occurs. Net acid excretion, hydrogen ions are secreted into tubular fluid along proximal convoluted tubule, distal convoluted tubules and collecting system. These are the segments वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जो हैं they are secreted into the tubular fluid, proximal convoluted tubules में, distal convoluted tubules में और collecting system में net acid secretion. यहाँ पे देखें ट्राइट्रिपल एसिडिटी. You are looking here, tubular fluid, cell, interstices. देखें, this is a tubular fluid. सोडियम फॉस्फेट Na2HPO4. ये बेस है. क्यों बेस है? इसमें H आयंस एक है.
ठीक है, ये बेस है इसमें। NaH2PO4 ये एसिड है। आप देखिए यहाँ से सोडियम खारिज हुआ, अंदर सेल के चला गया और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यहाँ से आप देखें इसके अंदर H2CO3 बना, डिसोसिएट हुआ, ये रीजनरेटेड HCO3 संभाल लिया, H आयंस फिर वापस आया, इसने इसके साथ मिलके NaH2PO4 बना दिया। दिस इज द टेक्निक ऑफ द H आयंस ट्यूबुलर फ्लूइड में, और दिस इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3 occurs when secreted H encounter and titrate phosphate in tubular fluid। देखो फॉस्फेट को ये ट्यूबुलर फ्लूइड में टैकल कर रहा है। Refers to amount of strong base needed to titrate urine back to pH 7.4। देखें ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। क्यों? यहाँ पे सोडियम 2 हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जफर हुसैन टॉकिंग टू यू on the very sensitive topic of the acid-base balance in the body. The topic which is ahead of me is the titrable acidity. You are looking here in this figure where the tubular fluid, cell, then the interstitial fluid. Titrable acidity. Keep in mind the fluid comes and it is having this sodium phosphate, and this gives the sodium which goes into the cells and then into the interstitial fluid. It's reabsorbed, and what happens? Titrable acidity occurs when secreted H encounter and titrate phosphate in tubular fluid. H आयंस जो हैं वो फॉस्फेट को इनकाउंटर करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, and they make their availability nullified. Refers to the amount of strong base needed to titrate urine back to pH 7.4. Here we need this strong base. Na2HPO4 is a strong base and NaH2PO4 ये लाइट बेस है। फर्क किसका है? जब Na2 है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब NaH2 है तो ये एसिड है। And you're looking here कि bicarbonate is being retained, sodium is retained, and the H ions is being buffered, and by this base NaH2PO4 it is excreted. Refers to the amount of strong base needed to titrate urine back to pH 40%, 15 to 30 milli equivalent of daily fixed acid load, relatively constant, not highly adaptable. This is the role of the phosphate buffer to neutralize the H ions. How the H ions are being consumed and they're used, or they're not let free, because जब वो free होंगे तो they will be causing the acidity. Then ammonium excretion, well, it is also a way of hydrogen excretion, a means to get rid of the acidity. You're looking here in the tubular fluid, what happens? Chloride has been produced in the tubular fluid. Sodium is counter-transported by the pump into the cell and then into interstitium. In the cell, what happens? Glutamine is being taken up by the glutaminase and ammonia is formed, which come into the tubular fluid. Now the H ions which is produced in the cells by carbonic acid, by the enzyme carbonic anhydrase,
the HCO3 is retained in the interstitial fluid, the H ions comes into the tubular fluid, and it is being now buffered by the ammonia and form ammonium. Ammonium makes combination with the chloride, and it is a extractable moiety. It can be excreted through the urine. This is how the ammonium excretion plays its role in getting rid of the H ions. This much slide is very much precious to see the role of ammonium excretion. Occurs when secreted H ions combined with ammonia. Ammonia कहाँ से आया? From the tubular cell. Glutamine has been now changed into the ammonia by the enzymatic action of the glutaminase. Occurs when secreted H combines with the ammonia and are trapped as NH4 salts in tubular fluid. 60%, 25 to 50 milli equivalent of daily fixed acid load, very adaptable via glutaminase induction. Glutaminase has got a certain role in the excretion of H ions by this much buffer system, the ammonia and the ammonium buffer system. Yes, you can see here ammonium excretion. This graph is telling millimole H ions added in 100 millimole of the HPO4 or NH3 on this side, and on this side the hydroxyl added, and you can see here H2PO4 and ammonium, the pK value, now they are coming down. Large amounts of H ions can be excreted without extremely low urine pH because pK of NH3 or NH4, ammonia and ammonium system is very high, 9.2. It has got a high pKa value. Well, acid base balance disturbances. अब इस पे देखिएगा. The response to acidosis. What do you mean by the acidosis? Addition of H ions. देखें यहाँ पर addition of H ions. H ion has been added. Now, what will be the next? HCO3 कहाँ से आया? Bicarbonate reserve NaHCO3 will dissociate into sodium and bicarbonate. The bicarbonate will come and it will attach with the H ions. They will form the carbonic acid. It will dissociate into water and carbon dioxide, and carbon dioxide will be exhaled. Increased respiratory rate होगा और लोअर हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. और मैंने अर्ज किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एज अ एसिड. इस तरह जो H ions आपने यहाँ पे ऐड किया, that is going like that. कि the carbon dioxide is going. It means the acid has been wasted by the respiratory mechanism. Now, you can see here the kidney always retain the sodium bicarbonate and excrete the H ions. Interactions among the carbonic acid buffer system and compensatory mechanism in regulation of the plasma pH. So this is how the plasma pH is being controlled by the respiratory and by the excretory. Both way you are looking in this transparency. Very much precious to know how the acidosis is being dealt by the respiratory system and also by the kidney. You can see the other way when there is a alkalosis, removal of H ions. H ions कम हो गए हैं. जब H ions कम हो गए तो फिर क्या होगा? फिर रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज करने से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जमा होगी. जब वो जमा होगी तो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी और ये डिसोसिएट होगा किस में? H ions में और HCO3 में. और HCO3 जो है ये सोडियम I'm ahead of this transparency.
agencies. Yes, you are correct. What happens? Response to alkalosis. क्या हुआ कि डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट क्या करेगा? एलिवेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के साथ मिलेगी H2CO3, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू H-ions एंड दी HCO3. चूंकि एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस को कैसे काउंटरैक्ट किया जाएगा? वहाँ पर H-ions भेजे जाएंगे एंड इट विल फॉर्म दी सोडियम बाइकार्बोनेट. नो दी अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर चूंकि एल्कलोसिस है तो एल्कलोसिस को नॉर्मलाइज करने के लिए किडनी जो है सिक्रीशन करेगा किसकी? HCO3 की. यहाँ पर रिजनरेशन ऑफ H-ions होगी और HCO3 जो है वो विल बी एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन. सो इंटरेक्शंस अमंग द कार्बोनिक acid bicarbonate buffer system and compensatory mechanism in the regulation of the plasma pH.